Namaskar everyone, welcome to Headlines of the Day. In this video, we will discuss major headlines of the Hindu. And before we start, I would say today's pain is tomorrow's power. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट खबरों पे नजर डालते हैं. आज की हमारी पहली हेडलाइन है अपहोल्डिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द इलेक्शन कमीशन. इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 6 और ये रिलेटेड है पेपर टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट्स पावर्स एंड फंक्शंस, इश्यूज एंड व्हाट मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट इज सफिशिएंट to preserve the independence of Election Commission of India and fairness of elections and more suggestions in this context. तो दोस्तों इससे रिलेटेड कंटेंट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. उसके अलावा कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ भी गिवन है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं. ठीक. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज द न्यू नॉर्मल इन द इंडो पैसिफिक कंटेस्टेशन. इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 6 और ये रिलेटेड है पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशन एंड साउथ एशियन रीजन्स फॉर इंडिया, China's outreach in the region and its repercussions for India and various initiatives taken by India in this context and what more steps need to be taken. तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स लाइन बाय लाइन यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर्ड हैं, आप एक बार देख लीजिएगा. अगर हम ओवरव्यू देखें तो China has long tried to mark its influence in the Indian Ocean and South Asian regions and enhance its strategic ambitions, and India's leading efforts in South Asia and Indian Ocean have attracted other Quad members for close cooperation in the region. Right. बाकी अदर पॉइंट्स के लिए आप एक बार इस आर्टिकल को देख लीजिएगा. ठीक. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज द प्रोफाउंड रेमिफिकेशंस ऑफ वन अमेंडमेंट. इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 7 और ये रिलेटेड है पेपर टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, इट्स ऑब्जेक्टिव, मेजर कंसर्न्स एंड व्हाट लाइज अहेड. तो दोस्तों इसको भी हमारी वेबसाइट पे रिसेंटली कवर किया गया है एंड लिंक यू नो की कहां मिलेगा. उसके अलावा कुछ पॉइंट्स यहां भी गिवन है तो आप यहां से भी देख सकते हैं. ठीक. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज अ न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 8 और ये रिलेटेड है पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट, व्हाट डज कुनमिंग-मॉन्ट्रियल पैक्ट एम टू अचीव, व्हाट इज द रोड मैप फॉर 2030 एंड 2050 एंड व्हाट फंडिंग अरेंजमेंट्स आर प्लान्ड. तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी सिग्निफाइज द वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ व्हिच ऑल आर कनेक्टेड एंड सस्टेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम्स enabling humans to coexist and they interact with the environment to perform a host of functions. Now let's talk about Kunming-Montreal Pact. It sets out targets for 2030 on protection for degraded areas, resource mobilization for conservation, compensation for countries that preserve biodiversity, halting human activity linked to species extinction, cutting pollution to non-harmful levels, and minimizing climate change impact and ocean acidification among others. Right? बाकी अदर पॉइंट्स के लिए एक लिंक अवेलेबल करा दिया गया है तो आप वहां से देख सकते हैं. ठीक. Our next important headline is how is the great gamble on the price cap on Russian oil might just fumble. It is available on page number 9 और ये related है paper to international agreements and policies से. In this article we have to know why did the West want a price cap and how is the price cap intended to work, how has Russia responded and how does it affect India's interest and what lies ahead. तो दोस्तों इसको भी हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है एंड लिंक यू नो की कहां मिलेगा. उसके अलावा यहाँ से भी आप देख सकते हैं. अगर हम ओवरव्यू देखें तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया हैव imposed a price cap on Russian seaborne oil to make it harder for Russia to fund its war against Ukraine. ठीक. Our next important headline is Rule 267, a bone of contention in Rajya Sabha. It is available on page number 11 और ये related है paper to polity and governance से. In this article we have to know about Rule 267 of the Rajya Sabha rule book and why this rule has become important. So friends, rule gives a special power to a Rajya Sabha member to suspend a pre-decided agenda of the House with approval of the chairman. ठीक. Our next important headline is 3 more sites added to the tentative list of UNESCO. It is available on page number 12 और ये related है paper 1 art and culture से. In this article we have to know about UNESCO tentative list and recent updates linked to it. So friends, Gujarat's Vadnagar town, iconic sun temple at Modhera and rock-cut sculptures of Unakoti in Tripura have been added to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites. Now let's talk about UNESCO tentative list. It is an inventory of those properties which each state party intends to consider for nomination, and India now has 52 sites on UNESCO tentative list. The list indicates rich cultural and natural wealth of India and shows huge diversity of our heritage. ठीक. Our next and last important headline is Navy takes delivery
डिलीवरी ऑफ सबमरीन वागीर टू बी कमीशनड इन जनवरी। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 12 और ये रिलेटेड है पेपर 3 डिफेंस सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट आईएनएस वागीर। तो दोस्तों आईएनएस वागीर इज शेड्यूल्ड टू बी कमीशनड इनटू सर्विस नेक्स्ट मंथ एंड इट इज द 5th स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन। ठीक, बाकी अदर पॉइंट्स के लिए एक लिंक अवेलेबल करा दिया गया है दोस्तों, तो आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर लिसनिंग। फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।